Okay, so we are live now, right? Am I audible? Please confirm in chat box, please. Yes, yes. Yes. Okay, so very good evening, everyone. So we'll take 2 minutes to start and just confirm in chat that I'm audible. Like I can see more than 200 participants. Yes. Okay, so before starting, I will tell you a few things like the screen which you are seeing named Rohan Deshmukh. That feed will be our. Am I audible? Audible? Just confirm Yes, once. yes. Yes. Yeah. Audible. You're So what I was saying, there is a feed called Rohan Deshmukh that will be our close live webcast. And whenever we are going to start our actual demo, you can pin that thing so that it will come full screen. So that one thing you need to do. Probably me and Umesh will go and shut down our cameras if needed. But the main feed will be Rohan's feedback, Rohan's feed, which is our flows webcast. So yeah. So very good evening, everyone. I think we should start. People will keep coming. So good evening, everyone, and I hope I'm audible. And thanks everyone for coming over here and join today's session. And hopefully, by the end of this session, you will have a brief idea what exactly virtual production is. See, right? So today we have our team members like me, Ashish Ranjan, that I will take care about all the technical aspects. Along with me, we have Umesh, and also we have Tushar, जो कि camera में अभी नहीं है. So that's the thing. So we have our full team. Also, we have Rohan, Abir sir, Sabir sir. Everyone is over here. Probably we will take care about whatever questions is coming, whatever technical stuff you want to ask. So we'll take care about that, right? So let me set flow of this session. So at start, we are going to start with what exactly virtual production is, what kind of virtual production we are using currently in our industry, and what today we are going to do. So over to you, Umesh sir. Hand over to you. Let's start with the. Umesh, you are on mute actually. Yeah. So, good evening, everyone. Am I audible? Yeah. Yes, yes. So, yes. Yes. So, let me introduce myself first. I am Umesh Patel, having an experience of almost 20 plus years in animation, VFX, in production as well as education also. So, today we will take you to the ecosystem of virtual production in India, as well as how virtual production evolving day by day as a technological emerging technology to create real-time content creations. You can say filmmaking with emerging technologies, right? So let's start the show. So let me share my PPT first of all. So yeah, can you see my screen? Okay, Yes. good. So yeah, so today's this webinar about the usage of Unreal Engine in virtual productions, right? By me and my colleague Ashish Ranjan, and we are the first edition of Journal Jury member of YFX Waves 2025. So in today's webinar, we will take you to how Unreal Engine evolving day by day, not from only gaming perspective, but mainly we'll talk about that virtual production side of the Unreal Engine. So, most of the people, I'm sure, they know 3D softwares like Maya
Blender, 3ds Max, Cinema 4D, kind of, right? But today's time, each and every department in VFX, you can say in animation also, you can say uh, Unreal Engine is a mandate. If you know Unreal Engine, you have a bigger chance to uh, jump into industries, right? Like animation and VFX productions. So let's start the show then. So let me open my first slide of introduction of virtual production with usage of Unreal engines, right? So what is virtual production first of all? So virtual production is nothing, it's just a blend of traditional filmmaking with real-time CGI and digital technologies that crafting immersive and interactive environments for visual storytelling is the another way of storytelling that we are using right now in today's sessions, which is virtual productions. So in virtual productions nowadays, it's a words itself, it's a virtual, right? So when I say virtual means you are controlling virtual assets, CG assets through some physical devices, right? In our cases, we will connect our um, live cameras. Means right now we have Blackmagic ASA 12K Mini Pro. So that camera movements translate to the your CG cameras, which is Unreal camera, you can say. So that way you can easily control your CG camera by our physical camera, right? But yeah, we will dig you into it more and more once we start the studio tour. But before we jump in into linear filmmaking, if you see on my slide, there is a word linear filmmaking, right? Linear filming. In linear filming, you can see there's a VFX editing, a process moving towards, right? So whatever traditional process we are following, right? Okay. But if you are talking about virtual production, then the VFX is the first and then film, right? I will take you to within a half an hour what that workflow of that virtual production as well as linear filmmaking. So yeah, so this is your first step of to understand the virtual production, right? Once you understand that virtual production, it means you are friendly to the your Unreal engines or kind of software. Your Unreal engines used for real-time content creations, real-time filmmaking process nowadays. If you heard about Mandalorian, and there are a lot of other movies. Hollywood's also in Bollywood also. Many TVCs started with that virtual production technology. Right now in Mumbai, in Chennai, in Hyderabad, there are in Delhi, there are more and more studio coming out. Just like the few name, if I can say that Lightcraft in Mumbai, K Shera in Mumbai, even you can say your Annapurna in Hyderabad, Ustream in Chennai. Okay, so these are the so many studios coming right now. Yeah, even the big name is DNAG in Mumbai. So, so there are so many studios currently available in India who use these virtual production technologies for their filmmaking process, right? So nowadays, virtual productions as an ecosystem growing day by day. So let's jump into that second virtual production slides. So why virtual production? First of all, ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग प्रोसेस है तो ये वर्चुअल प्रोडक्शन क्यों कर रहा है तो द मेन रीजन बिहाइंड इट इफ यू नोटिस ऑन माय स्क्रीन लेफ्ट साइड time and cost savings. That means you can save your lot of time. For an example, if you use your traditional filmmaking skills, right, and one day you are short with almost you can say 20 shots, right, 15 shots. But in virtual production technology, you have freedom to add more shots, right? Kind of 30, 40 shots also in a day, 50 shots also in a day. So it depends on the project to project, but I'm just giving you a understanding of how virtual production
saving us in a time as well as cost perspectives, right? Second is creative flexibility. When I say creative flexibility means, for an example, I want uh, time on shooting time on it's a 6 o'clock morning, right? एंड 6 बजे का शूट अगर आपके पास है तो आपको 4 बजे 3:30 बजे वहां पे सेट लगना शुरू हो जाएगा. सो अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया कुछ प्रॉब्लम आ गया तो यू नो दैट इट्स डिलेड टू 8 9 10 बट 6 o'clock का शूट 6 o'clock को ही होना चाहिए ना. वो 10 o'clock शूट होगा तो नहीं चलेगा. सो फॉर दैट रीजन दैट क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्चुअल प्रोडक्शंस आपको रात को 12 बजे का भी शूट करना है या आपको 6 बजे का भी शूट करना है एनी टाइम आप शूट कर सकते हो. आपको कोई टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो यहाँ पे क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि आपके हाथ में टाइम कंट्रोल है, राइट. आप जब चाहे तब जिस टाइम का शूट करना चाहो तब आप कर सकते हो. आपको मॉर्निंग का शूट करना है इन स्टूडियो इवनिंग टाइम तो आप आराम से मॉर्निंग का शूट कर सकते हो. अगर आप इवनिंग टाइम में आप शूट का प्लानिंग कर रहे हो तो आप भले मॉर्निंग में आप सेटअप लगाया है तो भी आप विदिन स्टूडियो इन इवनिंग का भी आप शूट कर सकते हो. तो दैट क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी you have in virtual production environment. Now, third is risk mitigations. When I say risk mitigations means in traditional process, if you want to shoot at your Gateway of India, right? Then Gateway of India or maybe some other places in India. For an example, let me take the extreme example, Himalayas range, right? If you want to shoot on Himalaya range, then Himalaya range, you know that there are a lot of restrictions on traveling as well as permissions as well as a lot of other things. So, and even at the same time, you have to transport your instruments, right? Camera, lights, and cranes, and a lot of other things. There are very costly things, and chances are more कि कोई ना कोई एक्सीडेंटली डैमेज होने का या गिर जाने का चांस हमेशा रहता है. तो वो एक रिस्क फ्री हो जाता है आपका अगर वर्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप शूट करते हो. Fourth one is your previs. So in pre-visualizations, you know that कोई भी एनिमेशन फिल्म हो या कोई भी आपका लाइव एक्शन फिल्म हो, आज के टाइम पे स्टोरी बोर्ड बनाते हैं आप लोग सब. यू आर वेरी अवेयर ऑफ दैट स्टोरी बोर्ड थिंग्स, राइट. तो स्टोरी बोर्ड इज योर नथिंग इज जस्ट हेल्पिंग द प्लानिंग योर शॉर्ट्स योर स्टोरीज in a very disciplined manner, so people can understand easily if your members, your studio members also can understand easily how short 1 to short 2 transitions or short 2 to short 3 transitions, right? That storytelling process they understand easily by storyboard. But in previous, it's a kind of, you can say you're planning things only, but you can add a lot of other things like if you want to take multiple cameras in a single locations, right? So you can do it, but in Unreal you can create your previs easily, right? That previs gives you a planning for virtual production. So I will show you what is previs and what things. So that one things. Now pick on set transitions, right? तो अगर आपके पास बहुत सारे सेट्स है, मतलब बना के रखते हैं अपने वर्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो आपको ट्रांजिशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. फॉर एन एग्जांपल, आप एक शॉट ले रहे हो, एक सीक्वेंस ले रहे हो गेटवे ऑफ इंडिया का, एंड दूसरा एक सीक्वेंस ले रहे हो आप दिल्ली का, दिल्ली के कोई लोकेशंस का, राइट. तो आप इजिली ये दो सेट्स को, अगर आपके पास अनरियल सेट्स अवेलेबल है तो आप इजिली स्विच कर सकते हो विद इन हाफ एन आवर और 15 मिनट्स, राइट. बिकॉज आपका फिजिकल सेट्स भी आपको उस हिसाब से एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसके लिए टाइम बोल रहा हूँ. अदरवाइज इट्स जस्ट अ प्रेसिंग ऑन कीबोर्ड. आप जैसे कीबोर्ड पे प्रेस करो तो वैसे ही सीन, डिजिटल सीन स्विच हो जाएगा. तो दैट्स अ वे पिक ऑन सेट ट्रांजिशंस. कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपको अगर 6 बजे का शॉट शूट करना है तो आप 6 बजे का लोकेशन, मतलब 6 बजे का जो शॉट है आपका, वो तो ले लोगे आप, बट टाइम तो धीरे धीरे पास होता है. 6 से 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा. दैट टाइम, दैट कंसिस्टेंसी, जो लाइट कंसिस्टेंसी है वो आपको मिलेगी नहीं. क्यों? क्योंकि टाइम तो होता ही रहेगा. आप भले कितने भी स्पीड से काम करो, कितने भी स्लो से काम करो. तो कंसिस्टेंसी एंड दैट सेंस इन वर्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यू कैन डू इट. मतलब आपको भले ना सुबह से लेके आप शाम को
15 शॉट ले रहे हो, बट 15 शॉट का सेम लाइटिंग आपको मिलेगा, जबकि आपको नेचुरल लाइटिंग में ऐसा चीज नहीं मिल सकता, आपको बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, राइट? तो दैट रिस्क दैट टाइम यू टू मैनेज एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन इज अ वे, आई कैन से द टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन. मतलब टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हो, कि वर्चुअल प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी. So that adaptations, I will let you know at the in a studio tour. What is adaptation and all? So you will get to easily by this words. Global collab. So global collab is nothing just for an example, my producer or maybe my DOP or director sitting at some other places, and I am sitting in my studio, right? So if I want to take to them my previews or maybe scenes or virtual countings and all things. So even they can control my lighting also from sitting outside of studio also. So global collab, people can easily, as much as many people, you can connect with your projects around the globe. So that global collab is very much important. So yeah, so that's the thing. Now, yeah, so use of virtual production in MIT. So currently, the film and televisions, you can say animation and visual effects, live broadcast, especially you know that IPL and cricket match, any sports tournaments, right? So that those have a live broadcast things. So in those areas, that real-time data transmitting is very much important. Right? So that live broadcast, you can say even news channel also for that matter. In games also, there are huge market for the games also, virtual questions, marketing and advertising. So people are using right currently emerging technologies for the campaign, TVC also, as well as some social media also. So there thing also you can use virtual productions with those music videos. Yeah, music video you can see here on my that right side bottom. So there also, because in music video, if you remember, there are so many sets they used, right? But if you travel or if you plan those kind of multiple locations, multiple scenes in your music video, then it's very difficult for you guys to manage transportation, logistics of actors and others crew member of that shoot. So currently, people are using it music video for that, right? So yeah, that's the thing. Now, workflow of traditional film productions. तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी फिल्म मेकिंग प्रोसेस होता है जो करंटली यूज हो रहा है. ट्रेडिशनल, व्हेन आई से ट्रेडिशनल मींस इट्स अ ओल्ड मेथड ऑफ फिल्म मेकिंग प्रोसेस. सो फर्स्टली क्या होता है कि यू डिसाइड स्टोरी एंड बेस्ड ऑन स्टोरी यू राइट इट दैट स्क्रीन प्ले. So you can write it down. Currently, people are using ChatGPT also for that story and screenplay. You can use it. So once you have screenplay, you need to do pre-production for that concept. So concepting, storyboards, planning, characterizations, background designs, and all this is required into pre-productions, right? Even that recce of that productions. So once you analyze each and everything related to shoot. Now you should jump into that production part. Production part is filming your stories, right? In different locations as per the story demand. So that is there. Now, once you shoot it, obviously you need to do editing, color grading, and the post process is VFX if required, and that sound editing also in the post productions. After that, it's a live distribution. Once your packaging, your completely editing and color grading sounds work is done. Now, time to publish to theater and all. So this is the live distribution publicity. Okay, so these are typical old school traditional film production methods, right? We call it as a linear productions also for that matter. Okay, so linear productions have a lot of challenges also. So ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग मेथड इन सीक्वेंशियल फिक्स प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिक्स है, बहुत सालों से चल के आ रहा है ना, तो उसमें ज्यादा कुछ नया इनोवेटिव नहीं हो रहा है. जो भी हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकल साइड से ही हो रहा है.
तो एक ये बात है, even filming on physical sets and locations is very tough nowadays due to permission issues or maybe climate issues, environmental issues, right? Crowd controlling also it's a big pain during shoots. So here you can see this. There's a very rocky area, snowy area where you have to take it your equipments for filming. But the risk is always there due to that environmental restrictions. Okay, so and so that's the things, right? Now, extensive use of green screen for VFX. Okay, so last almost you can say 30, 35 years, people are using green screen for that VFX. Okay, so now it's a very easy process for everyone, but it's an offline process. When I say offline process means once start your shoot in front of green screen, later in post production part you remove that green screen and add CG environments according to your stories. So we call it as a VFX, visual effects, right? So that's the thing. When post production work often occurs after filming, as I told you, you shoot your green screen and post production parts after filming. So it's already I discussed. High reliance on practical effects and physical props. मतलब कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आपको फिजिकल लोकेशन पे फिजिकल प्रॉप्स आपको चाहिए, otherwise you cannot make it. Okay, so that's the things for physical props. Limited flexibility for making real time adjustment. So for an example, let me give you an example for this line. You are shooting at your for an example this location, like mountain near Himalayas locations, right? So there you don't have that much time and you don't have that much scope of any last minute changes if you want. Okay, so it's very difficult due to some restriction on that environmental part, and so that's the main thing. And well established but can be cumbersome. ये बहुत ज्यादा प्रूवन फिल्म मेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि खराब है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है. But at the same time, there are a lot of other limitations part, as I discussed you guys, right? So अभी ऐसा माहौल आ गया, ऐसा टाइम आ चुका है in India, even in Hollywood, Bollywood, even South film also, they are using heavily technologies for that betterment of storytelling. Okay, so overall, it's a you can say in linear production, it's a very lengthy method for filmmaking process. Okay, and time consuming as well as expensive. Yeah, so that's a traditional filmmaking process. Now, let's understand that how virtual production different from the traditional film process. So, in traditional filmmaking process, you know that story ideations and all in come under production part. But here it is, you can see the story, screenplay, whatever you want, you just write it, right? And at the same time, you need to design your sets, digital sets, as well as some props, physical props also. So, to the extent of your digital sets, extension of your digital sets, 3D assets, buildings, visual effects, that sparks, fire, or something like that, which are required in your story. So, you have to design in this pre-production part. Now, in production part, once you have everything is ready, okay, so for productions, you need a visualizations, pre-visualizations, right? Pre-visualization, when I say means it's a uh, how you're gonna shoot your camera angles, right? Low angle, high angle, top, left to right camera movement, top to bottom camera movement, or dolly in, dolly out camera movement. So that visualizations itself in a Unreal Engine. Okay. So before you plan your shoots, you should know what kind of camera angle you are going to shoot. So that's a visualization part. I will take you to within a half an hour or 1 hour in this sessions, right? So yeah, that second thing is camera sync. So you know that in your visual effects process, camera tracking, 3D camera tracking down. But in this area scenario, in virtual production scenario,
we are using some camera tracking solutions for that. So there is no need to track after shooting. It's a real time. When I say real time means if my camera is moving, it's not required any PF track or equalizer things for my camera tracking process. It's already inbuilt in virtual productions setup. So I will take you to the in studio tour what is camera sync and all. So you'll get to know easily by visualizing those things when on live shoot. So that is there. Motion capture. If your story requires motion capture things, then you should have motion capture. Not required, then it's not made. So motion capture, we are using currently Rococo motion capture shoot for that live motion capture. But in today's session, we are not going to do it. Same thing, which is your LED live action screens. Okay. You can say LED also, you can say live green screen also. You can use it easily. So we'll show you one example with this. So you'll get to know better understanding of virtual productions, how you're gonna shoot with your story, right? That using virtual production environment. So third point is post productions. So in post production, you can notice that there is only editing and post bills. So editing, you know that once you shoot your completed, right, then you need to do edit as per your stories, as per the director vision, right? So once you edit directly, it's a live. So that's the thing in overall virtual production. The main difference is in traditional filming, such as in filmmaking with virtual production, it's the crux of this overall, I can say. It's a time saving, cost savings, and the most important part is the flexibility of your creativities. You can easily plan your shoot within a studio room. Okay, so that's the big thing. You don't have to travel or logistics or your shooting crews at plan location A to location B. Okay, so that's the benefit of virtual production. So let me here you can see this the virtual productions. The virtual production is a modern and innovative approach. It's a you can say it's a baby of your COVID. So in COVID, you know that nobody shoot live on the physical locations due to government restriction and all. But using virtual production, you can shoot it because it's a within a studio environment, control environment. So there is no penetration of any outside publics in the studio. So that's why virtual production is very famous during COVID time. There are so many shows that developed during COVID using that virtual production technology. Secondly, it's a simulation and dynamic versions because it's a technology thing. So obviously, it's a dynamic production technology things. Okay, so that's the thing. Utilize virtual sets and LED screens. So in this image, you can see it's a actress is just walking, performing with shots, right? And here it is camera somewhere at this side, and this is your LED, right? So that you can easily understand that LED is there, the actress is there, the camera is somewhere here. Where is my mouse right now? I will show you that the clip, that film, sometime. So this is the thing, right? Real-time integration of VFX into the shooting process. So whatever required, for an example, in this shots, there is no in this image even I can say there is no VFX right now, but I will show you in this film the VFX we used for that, which is you can say light flickering as well as my matching my physical lights as well as my digital lights. Both have to sync. So that's the thing, right? That's a challenging part, and we did it properly. Secondly, in this film, there is a camera movement in one shot, slowly in, and that screen looks completely different using that dolly in as well as out of. You can say that change your focal length during the same time. So
हॉरर फिल्म और मे बी टेंशन वाला लुक वाले जो शॉट्स रहेंगे, उस शॉट्स में आप लोग बहुत यूज भी करते हो। मैं आपको दिखाऊंगा ये फिल्म के अंदर कैसे ये वर्क कर रहा है, राइट। दैट्स अ थिंग। नाउ पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कंबाइंड, ये साथ में ही चलता है, मतलब पैरेलल चलता है। heavy reliance on digital environments and assets, obviously because it's a digital environment। आप यहाँ पे देख रहे हो, it's a digital environment। ये भी आपको पीछे दिख रहा है, वो भी डिजिटल एनवायरनमेंट है। लड़की के पीछे जो भी दिख रहा है आपको, दैट्स ऑल डिजिटल एनवायरनमेंट। एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रियल टाइम एडजस्टमेंट्स। अगर आपको टाइमिंग चेंज करना है ना, लाइट मजा नहीं आया, मतलब सुबह का लाइट करना था बट मुझे 10 बजे का चल रहा है, यू कैन डू इट इजिली, यू कैन चेंज इट द टाइम ड्यूरेशंस एज पर योर कन्वीनियंस। Emerging technologies gaining popularity for efficiency. Obviously, because the camera tracking is saying that DMX light setup, what we have right now, this is your DMX lights. So that technologies currently are very gaining popularity due to time saving as well as cost savings. Okay. Now the question is, what is the core part of virtual productions? So as I discussed with you guys, what visualizations, right? Previs. So previs is very much important for virtual production shots. Here you can see these are the shots which is from the student's film. This is the previous shots, right? The camera movement is there, actor position is there. Okay, lighting condition is decided. Everything is decided in this previs. So in short, in previs we use that light, camera positions and all things, just like technical visualizations for how many lights you're gonna use, how many camera angles or how many cameras you are going to use. But right now we are using only one camera because we have only one camera, so you can use it. Things. Stunt is if required any performing fighting sequence, then the camera angle also currently in today's scenario there are a lot of dynamic camera movements over there. So people can that DOP and cameraman team has to understand that fighting sequence as well as your camera angles, right? And camera motions. So that stunt is also nowadays very popular for that South film as well as Bollywood films also and Hollywood films also. Without that, people are not starting the shows. Photogrammetry. So photogrammetry is nothing. It's just scan your real world objects and convert into 3D or elements, right? So that photogrammetry things in students' films. For an example, that box in my this box we captured and converted into 3D digital assets. So yeah, that virtual scouting. Virtual scouting is just a digital recce of your 3D scenes, right? CG scenes. For an example, for this instance, for an example, ये एक सीन आपको दिख रहा है, तो अगर वर्चुअल स्काउटिंग मीन्स आपका वीआर ग्लासेस आप पहनो और वीआर ग्लासेस पहनने के बाद आप सीधा यहाँ पे सीन के अंदर जा सकते हो। इवन आप फोकल लेंथ, कैमरा एंगल, लाइट्स, यू कैन चेंज इट इनसाइड using that VR glasses, right? So you can do it. Motion capture. The motion capture is also here. You can see that the motion capture suit of Coco, and that translate into that CG character. So we are using motion capture. IC effects, in-camera visual effects. So in-camera visual effects is nothing. It's just your this thing. Whatever you shoot from your camera, along with VFX, that's why we call it IC VFX, right? So there is no need of after shooting any post work of any visual effects. So it's IC VFX. तो आप जो भी शूट कर रहे हो कैमरा से, वो आपका फाइनल शॉट है। आपको सिर्फ कलर एडिट करना है, कलर ग्रेड करना है, दैट्स इट। एंड साउंड जो भी आपको ऐड करना है, नथिंग फैंसी आफ्टर दैट, नथिंग एनी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क। Hybrid virtual productions, right? Hybrid virtual productions is a green screen real-time compositing process. Okay, so for that, girls, what is that of green screen and standing on that some rock? So in film, there are similar design of rocks in the background and on the mountain side, and green screen automatically removed, and it's a real time. I will show you in a couple of minutes. That things. It's a hybrid means your green screen remote real-time compositing process. Let me show you some films
This is the film we student use that ICVFX technology. So let me play, but let me check. 1 minute, I'll just need to share, include sound. Yeah. 1 minute. Do not open. Go there. So yeah, so this is the film The Gift Box. ये फिल्म जो है ना हम लोगों ने इंटरनेशनल फिल्म कॉम्पिटिशन है जो वाइव मार्स तो कैमरा ट्रैकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये फिल्म सेकंड पोजीशन पे आई थी स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर, राइट, एंड इंटरनेशनली परफॉर्म compete with many big countries like US, Canada, New Zealand, China, even Japan, Singapore, right? And from India, we are the only one, the Virtual Production Academy. So ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हम लोग के स्टूडेंट्स के साथ भी। स्टूडेंट को भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कैसे होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे फिल्म बनती है यूजिंग दैट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्चुअल प्रोडक्शंस, तो हम लोग ने वो बात किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि एक शॉट आएगा जिसमें मेरे को एक शॉट है, ये देखिए, ये शॉट दिख रहा है आपको, डॉली इन एंड जूम आउट। तो ये जो शॉट है मतलब कैमरा इन जा रहा है और जूम आउट हो रहा है एट द सेम टाइम। तो ये पोजीशन ये जो काम किया था, मतलब हम लोगों ने अनरियल ब्लूप्रिंट्स का जो सेटअप्स है उसको एज वेल एज दैट सिंक विद माय कैमरा एट द सेम टाइम। ओके, तो एक ये है। दूसरा भी अगर आपने देखा होगा कि देयर इज वन, ये देखो, ये जो ब्लिंकिंग आ रही है ना, Go there. so that's also controlled by blueprints as well as my TMX setup in my studio। तो वो एक है। तो ओवरऑल ये कंप्लीटली फिल्म आप जो देख रहे हो, इट्स ICVFX film, you can say, in camera vision effects film। So whatever in it, it's here you can see this, जो भी दिख रहा है। तो ये अगर आप कोई लोकेशन पे जाके शूट करते हैं या आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये चीज, क्यों? क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि इस टाइप के शॉट्स, अगर बंगलो वाला शॉट है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये वाला लोकेशन ढूंढने में ही तुमको बहुत टाइम लगेगा, और टाइम आपको मिल भी गया तो आपका कॉस्ट भी इतना ही है, वैसा है। तो what the benefit of virtual production is it's a cost effective, आपका टाइम इफेक्टिव भी है, परमिशन इश्यूज नहीं है, टाइम कंट्रोल है आपके पास, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटीज है। So these are the, now let me show you the making of this film।
तो तब आपको समझेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट। तो ये अगर आप मेकिंग में देखोगे तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसा अभी ये आपने देखा था इमेज के अंदर, ये वाला लड़की चल के आ रही है एंड कैमरा जो है वो ट्रैक पे है, सर्कुलर ट्रैक पे है। और जैसे ये लड़की यहाँ बैठती है, पीछे बैकग्राउंड ऑलरेडी सीजी बैकग्राउंड है। और ये कैमरा के साथ सेम कैमरा, कैमरा जैसे ही मूव होगा वैसे ही सीजी कैमरा भी मूव होगा। ब्लैक मैजिक का जो कैमरा है मेरे पास वो भी मूव होगा एट द सेम टाइम। मेरा जो सीजी कैमरा है वो भी सिंक होगा उसके साथ। तो कोई इश्यू नहीं है फ्लोटिंग का, ऐसा कुछ है। तो एक ये है। प्लस आप देखो ये शॉट फ्रॉम द कैमरा एंगल, आपको हर एक जो ब्लैक मैजिक से दिखता है वो, ये देखो दिखता है ये जब भी बात करा था ना आपको। these are the students, by the way। ये भी हमारे स्टूडेंट ही है, 20+ years of experience in this VFX as well as your editing। these are the students। तो ये किया है the sound design also। these are our students design that film sound। that's simple। so this is the IC effect shots I can say। now let me take you to the broadcast, right। जैसे आप IPL समझते हो, तो IPL वर्ल्ड कप आपको जो भी लेजेंडरी प्लेयर जो है इन स्टूडियो डिस्कस करते हैं बिफोर आफ्टर मैच, तो वही आपको सेम चीज यहाँ पे मिलेगी। मैं पूरा फिल्म नहीं चलाऊंगा, बहुत लंबा फिल्म नहीं है, बट हाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, आपको आइडिया। ये तो कम्प्लीटली रियल टाइम, Jungle Cup, ऐसा नहीं है कि हमने प्रीमियर में जाके एडिट किया है। brought to you by the Virtual Production Academy. Ladies and gentlemen, welcome to another exciting edition of the Jungle Cup. Get ready to witness some thrilling matches unfold right in front of your eyes. The atmosphere is absolutely electric as the teams prepare for a spectacular tournament over the next few days. Witness gripping matches, astounding display of skills, and the pursuit for ultimate glory. Let's take a moment to appreciate what every team is striving for: the prestigious Jungle Cup trophy. The trophy symbolizes the spirit of sportsmanship and dedication. Turning our attention to the qualifiers, as you can clearly see on the screen, 12 teams entered. So everything, whatever you can see, then motion graphics हो गया, आपका कैमरा से जो फीड आ रहा है वो हो गया, पीछे बैकग्राउंड जो स्क्रीन रिमूव हो रहा है वो हो गया, एवरीथिंग इज रियल टाइम। ऐसा नहीं कि मैंने प्रीमियर में जाके मोशन ग्राफिक्स अलग डाला है, इसका शूट अलग डाला है, नहीं, इट्स कम्प्लीटली रियल टाइम। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब यही रिकॉर्ड हो रहा है, खाली कलर करेक्शन जो आपको करना है अगर ये रॉ है इसकी वजह से, दैट्स इट। अदरवाइज वो भी नहीं करना है तो वो भी सेटिंग है उसका, वो भी आप डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। तो लेट मी टेक यू टू द मेकिंग ऑफ दैट स्पोर्ट ब्रॉडकास्ट। ये देखो, ये आपका एकदम लाइव दिख रहा है, आपको जो शूट कर रहे हो आप ये दिख रहा है, और एट द सेम टाइम पे यहाँ पे कैमरा को ये दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्ले किया यहाँ पे पॉइंटर पे और यहाँ पे चला दिख रहा है, नहीं, ये शूटिंग जो हो रही है वही सेम एक्शन है, वही सब कुछ सेम।
इवन आप देख सकते हो कि बहुत सारे सेट डिजाइन हम लोगों ने किया है यूजिंग अवर एआई टूल्स आल्सो यू कैन यूज इट फॉर सेट डिजाइन. तो ये सब बहुत बड़ा मेकिंग है. तो आप यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो. बट आप देखो यहाँ पे एकदम लाइव चल रहा है, देख रहे हो. ऐसा कोई ऑफलाइन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं. सो लेट मी टेक यू द collaboration with FTI. Recently, we collaborate with FTI. FTI, you know that, right? FTI पुणे. पता है आप लोगों को FTI क्या है? मतलब it's a premier institute of filmmaking learnings, right? Educations. So it's in Pune. So it's just like as you can compare with NID, you can compare with IIT. The IIT of your filmmakings. तो मैं कुछ 3 बैचेस हम लोगों ने पास आउट किए पोस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को सिखाया, राइट, स्टूडेंट्स को. तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ. ये देखो ग्रीन स्क्रीन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बात किया था ना थोड़ी देर पहले ही कि ये लड़की का एक इमेज था, वो माउंटेन पे दिख रहा है, बट जबकि ये है वो स्टूडियो. यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, राइट. एट द सेम टाइम पे आप देखो यहाँ पे ये स्टूडियो के अंदर ये स्टेप्स पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये लोग मैं दिखाता हूँ उसका हायर वर्जन भी मेरे पास है. और ये इजीली क्योंकि फिल्म जो है हम लोग का थोड़ा एमबीए है, इसके हम लोग नहीं दिखा सकते. ये एफटीआई के 3 बैच को पास आउट किया, चौथा बैच भी अभी आएगा अगस्त. ये क्या इवन ये आप देखो क्लिप आपको समझेगा क्या बात करें. ये हमने एक ब्यूटीफुल शॉट लिया था, रियल टाइम है ये, कुछ भी आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन कुछ नहीं है इसके अंदर. सो दैट इज दैट. बहुत लंबा सीक्वेंस है, कैमरा भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. सो या दैट्स द थिंग. लेट मी टेक यू टू द मोशन कैप्चर. So because motion capture is again the part of the digital project. It's a student film. Let me show you. ये YouTube पे भी पड़ा है, आप YouTube पे भी देख सकते हो. इसलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, इससे आपका टाइम भी बचेगा और हम कुछ नया भी देख सकते हैं. मोशन कैप्चर और ये जो है रिसेंटली फैम अवार्ड्स करके मुंबई में जस्ट 2-3 महीने पहले ही हुआ था. उसमें ये मोशन कैप्चर इन स्टूडेंट कैटेगरी में ये गोल्ड विनर था. पूरा तो मैं इस पे मेकिंग दिखाऊं तो ज्यादा समझेगा आपको. तो ये मेकिंग देता हूँ, यहाँ से चालू कर. फिल्म बाय आर्यन लाडेकर. तो ये बहुत बड़ा मेकिंग है. मैं कोई दूसरा भी दिखाता हूँ आपको. स्टूडेंट का एक अच्छा फिल्म दिखाता हूँ, मैं मेकिंग ही दिखाता हूँ क्योंकि मेकिंग में ज्यादा समझा पाऊंगा आपको. एक और फिल्म है, मेटा ह्यूमन. आप जो जानते हो अभी मेटा ह्यूमन यूज करके बना है.
this is all about your motion capture. The all whatever I am showing you right now, it's a student work of the virtual production academy. Yeah, the best part. ये इतनी सारी हमने कम से कम 8 एक फिल्म बनाई है अब तक, 8 से 10 फिल्म बनाई है हम तक. उसमें से 2 फिल्म को रिकॉग्निशन मिला है. वन इज इन इंटरनेशनल लेवल पे, जो सेकंड प्लेस पे स्टूडेंट कैटेगरी में अवार्डेड था. दूसरा है वैम, जैसे मैंने बोला आपको, जो पहले मोशन कैप्चर का जो फिल्म देखा था उसमें भी अवार्डेड है उसके लिए मोशन कैप्चर कैटेगरी. द प्राउड मोमेंट फॉर द वर्चुअल प्रोडक्शन. या करियर ऑप्शन इन वर्चुअल प्रोडक्शन क्या है? वेड आर्टिस्ट. वेड मतलब वर्चुअल आर्ट डिपार्टमेंट. आप जो भी वर्चुअल प्रोडक्शन शूट करोगे उसके लिए जो भी आपके एसेट्स लगते हैं, आपको क्रिएशन करने हैं या फिर आपको असेंबल करने हैं या आपको एक एनवायरनमेंट बनाना है, it comes all under in WED department, WED artist doing it. So that's the photogrammetry and scanning technicians. Currently, if you know that there is one company in India, Volume X. So Volume X क्या करता है बेसिकली कि जो भी एक्टर्स है उसके कंप्लीटली बॉडी एंड फेशियल इमोशंस सब कैप्चर करता है एंड उसको स्टोर करके जो भी फिल्म के जो भी थीम्स है उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं. बट ये अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन का रेप्लिका ईसीजी 100% मैच होता है. वो लोग अपना काम करते हैं. इवन हमारे स्टूडेंट्स भी जो है ऑलरेडी 2 प्लेस्ड है वॉल्यूम एक्स में. सो दे आर डूइंग प्रोग्रामेट्री एंड स्कैनिंग एज अ टेक्नीशियंस. वॉल्यूम ऑपरेटर मतलब आइस, आप जो एलईडी देख रहे हो आप, तो एलईडी जो है अगेन इट्स अ वॉल्यूम. यू कैन कॉल इट एज अ वॉल्यूम बार और वॉल्यूम. Even you can say LED wall also for that matter. Volume operator is the defined word for job. Motion capture technicians, रियल टाइम कंपोजिटर. मतलब आप ग्रीन स्क्रीन कर रहे हो, आपको ग्रीन स्क्रीन रियल टाइम कंपोजिटिंग भी होगा. वो एक स्किल्स है. वो है प्रीवियस आर्टिस्ट. प्रीवियस आर्टिस्ट मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले. गेम इंजन ऑपरेटर मतलब क्या, अनरियल आपका जो बात कर रहे हो आपको, अनरियल का आप ऑलराउंडर हो आप, वो भी एक आप कर सकते हो. बढ़िया टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि आपको वर्चुअल प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप उसको यूज कर सकते हो. वर्चुअल कैमरा ऑपरेटर मतलब आपका वी कैम जो के उसमें आता है वो है. वर्चुअल प्रोडक्शन सुपरवाइजर ओवरऑल जो शूट होता है ना उसको मैनेज करता है टेक्निकली एज वेल एज जो भी चैलेंजेस आती है उसको ओवरकम करता है और एकदम मिनिमाइज कर देता है एरर्स को. और जो भी डायरेक्टर है, डीओपी है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वर्चुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड वो फुलफिल करता है, तो सुपरवाइज करता है ओवरऑल शूट जो है वो. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, एलईडी मतलब वॉल आपका बोल रहे हो, एंड वीडियो एडिटर्स. सो दे आर द कॉमन career options in virtual productions. Virtual production studios in India. मैंने जैसा बोला आपको कि अन्नपूर्णा है, के सिरासरा है, यू स्ट्रीम चेन्नई, इंटेली स्टूडियो चेन्नई, स्टेज अनरियल चेन्नई, टिल्ट लैब्स, एक्सट्रीम मीडिया, सिनेम, डीनेट, राइट. सो दीज आर द बिग नेम्स यू कैन से इन इंडिया. इवन नाउअडेज आप देखोगे ना हर रोज लिंक्डइन पे तो कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिलेगी. हॉलीवुड लेवल पे भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडियो ओपन हो रहे हैं एलईडी के साथ, एम्बियंस के साथ. ये सब फिल्म से बहुत सारी अभी भी तो और भी फिल्म ऐड हुई है. क्या करते हैं नून प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, आप देख ही सकते हो. अभी आज कोई भी फिल्म होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो वर्चुअल प्रोडक्शन का रोल रहेगा. एंड एज एन इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव राइट नाउ. सो इन इंडिया 507 millions by 2030. इट्स अ CAGR आप गिनोगे मतलब ग्रोथ जो गिनोगे अगर आप तो 22% है, तो बहुत बड़ा माना जाता है. मतलब फ्रॉम 23 to 30. तो ये की है तो एक रिसर्च एंड या तो आशीष सर आई एम हैंड ओवर टू यू फॉर अनरियल थिंग्स लाइक एंड द स्टूडियो टूर आल्सो. सो या ओवर टू यू. Thank you, sir. Thank you. Okay. So I hope you have an idea, overall idea how we are doing virtual production. But see, I'm not going to take much time. Directly, I know everyone is waiting how to see how actual production happens. So I'll take you through Unreal Engine in 5 minutes, and then definitely after that we'll jump to our floor. So let me share my screen. Hopefully my screen is visible to everyone. Please confirm once if it's visible. Right? Yeah. So we are working on this project, and today we are going to show it to you. Of course,
before doing any kind of shoot, before doing any kind of project, we need to make our sets, we need to do our texturing, lighting, everything we need to do. So for this project or whatever we are going to do in coming future for virtual production, our setup is on Unreal Engine, right? So this is something I'm going to tell you, like, we have definitely a very good setup, and the main thing is lighting. Whatever scene you are making, if you want to increase or if you want to enhance your outcome, you need to work on lighting, right? So it's not possible for anyone to do everything regarding virtual production in 1.5 hour, but definitely we are going to give you a hint what exactly virtual production is, right? So over here, I have type of lighting done in this particular set. One is my main key light, which is coming from top. Obviously, there is no opening, but if you're going to see through my framing, I don't have any floor in this particular thing, so that I mimic something like my moonlight is coming from top, right? And to compensate my blue light or moonlight, I am having multiple things, right? And these candle lights are just flickering. So in light, I mainly use one directional light. If I'm going to shut it down, if you can see. Mostly you guys are using directional light for your main key light, but here I have used my directional light very cleverly just to fill my entire scene, right? So there is no hard and fast rule that if it's directional light, then it should be a key light. No, it's not mandatory. So here, as you can see over here, just I filled my entire scene with directional light, and after directional light, I am using exponential height fog. So that if you can see over here, I am having my volumetric fog. So exponential height fog is controlling that thing. Also, I'm using one spotlight, which is my key light, and also I'm using another spotlight, which is my this area where we are going to see how I'm going to utilize it. Like, apart from that, if you can see, my few lights are flickering. So I trick that thing as well. And if I'm going to show it to you, I have created a material, very pretty basic material, where I'm going to, I have used a time, and I controlled my time with one value. And after using so many things, and now my emissive material is ready. That you can see, I'm having my more control over there, right? So again, it's a very tricky part. So you have to give time if you want to learn these things accordingly. And if you can see, I have used that particular material as a light function, right? So in every light which is flickering over here, if I have to show it to you, so particular, if you can see, this light is flickering. No, this light is not flickering. If I'm going over here, you can see my light is flickering, and if I'm going to show in my light function, I have used that light. So that's how I created light flickering, so and so forth. This is my setup, and tentatively I have set up with this camera angle so that if needed, I can do it, right? So that's a pretty basic setup of my Unreal Engine scene. And let's jump to our floor directly so that you can see how I'm going to utilize this scene in my real time, right? Okay, so just it will take 1 minute, and I'm going to stop sharing, and in just 1 minute I'm coming back, right? So meanwhile, if you have any questions, you can type in question and answer, and thanks to those people who are making nonsense in our chat, so that we had to disable our chat. So thanks to them. And now you have to ask anything, you can type in our Q&A, and there probably we are going to give answer. So let me check. Shiba is saying probably we have replied. How virtual production is getting used in games? In many roles, like cinematic, like any character animation or character thing, we are going to use it in virtual productions. It's a good question asked by Darsh. So probably after this demo, I'm going to answer this thing. So please not to worry. Okay, so we are ready. Okay, so
Okay. So I hope I'm audible. So from PC now on my floor. So hopefully I'm audible. Please confirm. Please confirm once. Yeah. Hopefully I'm audible to everyone. And if you can see, I'm having two feeds now. And to be very frank, this whole process or this session is truly backed by Virtual Production Academy, and it's a again live thing, right? So now, as I have showed you the way how I used Unreal to do my scene, to do lighting. Now we need to bring or need to export those data or that particular data to Ximetry. So we are going to use Ximetry for removing live chroma to adding our scene. So as can you fix my main camera? So one by one, I'm going to tell you multiple things, right? So let me take you through the little bit of what kind of hardware we are using. So if I will ask Ganesh to come over here. So as इसको वो करो, switch करो इस कैमरा पे. We are having this camera? No. We are having this camera, right? So this is live, right? Please confirm once. So, okay. So we are using real-time camera tracking solution, which is our Vive Mars. And in Vive Mars, we have three parts, right? I'll show you. One part is over here. As you can see, I have a black box. Can you show? Can you show this thing? Yeah. So we have four boxes. We call it base stations. So one is there, and two are there. So these are the base stations, and base stations mostly we are using to map our entire area. And we have another part of same, what we can say, a tracking solution, which is called rover. Tushar, can you give me rover so that I can show? Yeah, so we are having rover, and rover is basically nothing. It transmits location in X, Y, and Z axis, right? So same hardware I'm having over my camera, if Ganesh can show. So this is the same rover which I'm using. And what it will do, it will send data of this particular position to my third part of Mars system. So this is Mars. And now this Mars is having, okay. So now this Mars is having data of location and position. And Mars is transferring that particular data to my Unreal Engine. And that's how my Unreal Engine's camera is connected or synced with my physical camera, right? So apart from that, I am having my camera, which is Blackmagic Ursa Mini 12K Pro. And this camera is specifically designed for my virtual production. It's having inbuilt OLPF filter, which cuts moire. Also, it's having inbuilt ND filter, and it can shoot up to 12K. But right now, our setup or right now our project is set to 4K. Apart from that, we are having few processors, right? So processors are nothing but processors are used to take care about whatever data I am transmitting from my PC to my LED volume wall or another thing. That's how I'm controlling all those data, transferring data. Because remember, I am not using any image or rendered video. Everything is live, and all the background which I'm going to show you, it's purely Unreal Engine's project file. Also, I'm having my brain bar, which is again a little bit of hardware dependent. Hardware for that particular thing, we are using 128 GB of RAM. We are using i9 processor. We are using RTX 4090 Ti cards, 32 GB. Taking card inbuilt because we need multiple inputs and outputs, right? So also we are having our light setup, which is we call it DMX lighting. These all physical lights can be controlled through softwares called Magic Cube PC, and I can connect my Magic Cube PC to my Unreal Engine. That's how I can control my physical lights via Unreal Engine as well. So that's the best part of hardware, right? So I hope you have an idea how hardware supports us while doing
virtual production because it's totally hardware dependent. It's a connection between hardware and software. You need to understand. And by using these hardware technologies and software technology, we are doing our virtual production. Either it is LED volume wall, which we can see. In another session, probably we'll talk about LED volume wall. Or in this session, we are going to talk about green screen virtual production, which is hybrid virtual production, right? Yeah. So, आशीष सर क्या ये ग्रीन स्क्रीन जो आप दिख रहा है यहाँ पे Yeah. ये क्लॉथ है कि फिर क्या है मतलब नहीं, इट्स नॉट अ क्लॉथ. हमने इसको पूरा बनवाया है वैसा बोर्ड पे. और वी आर नॉट यूजिंग एनी रेगुलर कलर और ग्रीन स्क्रीन पेंट. वी आर यूजिंग रॉस्को पेंट which is specifically mean for green screen thing, because this paint doesn't reflect light much, right? So that's it's a different kind of paint and different kind of Let me setup. add one thing for the Roscoe paint. Roscoe paint बेसिकली करता है क्या कि जैसे कम लाइट में भी है बहुत जल्दी तरह से वो अच्छी तरह से वो इल्यूमिनेट हो जाता है. Correct. इससे क्या होता है कि मिनिमम लाइट सेटअप पे आप काम कर सकते हैं. Correct. So that's the best part of Roscoe. Okay, so I think it's a good overview of what we are having over here as a setup. So guys, can we directly jump to our main thing? Okay, so let's come over here. Come over here. I think we're screen पे हैं. And एक बार एक्समेट्री का सिर्फ सेटअप दिखा दो. हाँ. So now I request Umesh sir to just share screen, and this is our axiometry setup. And if you can see, it's already shared. तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि बहुत ही कम नोड में हमने बनाया है, बट एक्चुअली जब एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे नोड मिल सकते हैं. लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट इट्स पार्ट ऑफ दैट थिंग्स. तो अगर आप जाओगे तो ये आपको देखने को मिल सकता है. कोई बड़ी बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ दैट जॉब है, बट बहुत इजी कॉम्प्लेक्स है. आपको लगता है कॉम्प्लेक्स भी बोल रहा हूँ, इजी भी बोल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ये है कुछ कुछ चीज रिपीटिंग, इसके लिए आपको वायर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं. बट एनीवे डिस्कशन. बट या आपको जो ओवरऑल दिख रहा है बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्कआउट दिख रहा है, जिसमें आप एक आउट देख रहे हो कैमरा का भी है एज वेल एज योर आपका रियल टाइम कंपोजिटिंग में मैं थोड़ी देर पहले बोला था. तो कोई ऐसे से आप जाओ तो थोड़ा पीछे चला बैक से. Okay, so let me take them through what we are doing exactly and what we are having, right? So okay, so if I'm going over here. So yes, तो अभी आप देख सकते हो कि आशीष सर जो है एकदम आपको मिलेंगे. मेरा आवाज आ रहा है? और गाड़ी पे क्या है? हाँ सर आवाज आ रहा है. आशीष सर थोड़ा सा एग्जैक्टली क्या है कि एकदम ग्राउंड पे कांटेक्ट तो ये सब आपको यहाँ पे दिखा है. कैमरा भी मूव कर रहा हूँ, फिर नोटिस दैट. बट यहाँ पे कोई ट्रैकिंग बैकिंग फ्लोटिंग का कोई इश्यू नहीं है. मतलब जनरली क्या होता है कि आप कैमरा मूव करते हो तो सीजी एनवायरनमेंट के साथ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ ये अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले का इश्यू हो रहा है मेरे ख्याल से. द ग्रे ग्रे दिख रहा है, सम डिस्प्ले इश्यू, क्योंकि यहाँ पे तो सब सही आ रहा है. नहीं यहाँ पे जो है ये फाइनल. बट यहाँ पे फाइनल आपको ये दिख रहा है. ठीक है, गुड. चलो तो फाइनल पे आपको सही दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं. मुझे So I'll request Ganesh to just come that way and show them the final out what we are having and what exactly what our. या तो आप देखो अभी मैं कैमरा मूव भी कर रहा हूँ तो आपको समझेगा अभी कि क्या हो रहा है. राइट, मैं आपको हर एक लेवल पे उसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो एकदम ट्रैक्ड है, एकदम अलाइंड है. बट या अभी लाइटिंग करनी है फॉर एग्जांपल आपको, क्योंकि लाइटिंग बरोबर नहीं हुई है, क्योंकि हमने जानबूझ के सब लाइट्स ऑन नहीं किया. बट जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे करेंगे. तो मैं इसका क्लिक करेंगे. यस, तो लेट मी ऐड सम क्लिकर्स. तो आप देखो अभी स्क्रीन पे भी फ्लिकर हो रहा है, एज वेल एज आशीष सर के फेस पे, बॉडी पे भी अच्छा खासा फ्लिकर देखने को मिल रहा है. आप उधर दिखाओ तो स्क्रीन पे दिखाओ, मतलब यहाँ पे तो देखो बहुत ज्यादा फ्लिकर हो रहा है, क्योंकि हमने एलईडी वॉल को यूज किया है एज अ किकर, लाइट किकर. तो यहाँ पे जो भी ऑरेंज कलर का, रेडिश ऑरेंज कलर का आपको जो दिख रहा है फ्लिकर, वो आपको सिंक हो रहा है
ग्राउंड पे भी आप देखोगे यहाँ पे, तो ग्राउंड में भी आपने नोटिस किया होगा कि ग्राउंड में भी आपने नोटिस किया होगा कि यही वाला सेम चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कोई ये सेम फ्लिकरिंग अगर मुझे बढ़ा के आशीष के ऊपर, तो मैं बहुत इजीली, मेरे पास स्पीकर है तो मैं आराम से इसको मैं मेरे प्रोसेसर के थ्रू मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। ये देखो बड़ा अभी, तो जैसे ही बढ़ा तो आप देखो यहाँ पे आशीष के ऊपर भी अच्छी खासी फ्लिकरिंग जो है वो बढ़ रही है। तो आप ये चीज आराम से कंट्रोल कर सकते हो। या दूसरा, एक सॉफ्ट लाइट जो आनी चाहिए, वो सॉफ्ट लाइट भी व्हाइट लाइट से आनी चाहिए। तो व्हाइट लाइट भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है इन द सेंस कि इंटेंसिटी कम पड़ रही है, तो उसको भी मैं इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ। तो अगर आप जाओगे तो एकदम ब्यूटीफुली आप उनको एनहांस कर सकते हो। इवन दैट लाइट आल्सो, लाइट चल रही है। हाँ, ये लाइट्स का भी मैं इंटेंसिटी दूसरा से बढ़ाओ तो प्लीज इसका, प्लीज समय की लाइट्स पे जाओ। बढ़ाओ तो अभी देखो इल्यूमिनेट प्रॉपर हो रहा है। इवन बैक साइड से भी एक लाइट आ रही है जो कि येलोइश टाइप की थोड़ी होनी चाहिए। तुषार सर, आप ये जो लाइट्स है, आरजीबी लाइट्स जिसको हम बोलते हैं, इसको आप कुछ चेंज कर सकते हो। नंबर इसको भी थोड़ा सा मैं जानबूझ के, नंबर है उसका आपका 125। इसका कलर चेंज करना है। हाँ, उसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप फ्रॉम माय स्क्रीन। आप देखो यहाँ से कोई भी आप रेडिश अच्छा लगेगा। अभी आप ऑरेंज करो उसको, रेडिश करो उसको, तो देखो प्रॉपर फ्लिकरिंग जो है ना। तुषार सर यहाँ से चेंज कर रहे हैं तो लाइट में भी चेंजेस आ रहे हैं। चेंज करो सर, कोई भी कलर चेंज करो उसका, तो लोगों को समझेगा कि क्या है। आप लोग प्लीज अपने जो थंबनेल है ना, जो आशीष सर का जो थंबनेल दिख रहा है, उसमें आप देखना बड़ा स्क्रीन करके, तो आपको ज्यादा समझेगा यहाँ। राइट, 1 मिनट में स्विच करना हो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अभी चेंज करो, ये देखो अभी चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम करो। ग्रीन हो गया, ऑरेंज करो तो ऑरेंज हो गया। तो ये आराम से I can control from my Magic Cube PC software, right? From the computers, there is no need to adjust from manually, or you can say some other way. So yeah, so एक ये रहा। इवन आप लोग और ज्यादा अच्छा काम करोगे तो आपको जो मैचिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुली लाइट को मैच कर सकते हो आप लोग। जो भी आपको फ्लिकरिंग जो दिख रही है वो भी फ्लिकरिंग आप चाहो तो मैच। सर, आपको लाइट बता सकते हो जो फ्लिकरिंग कर सकता है, मतलब मुझे करना है फॉर एग्जांपल ये लाइट को मुझे करना है, ये जो अभी आपने 125 नंबर की लाइट्स को किया था, तो उसमें फ्लिकरिंग डालो तो हाँ थोड़ा फास्ट करो तो लोकेट करो इसको, चलो फास्ट ये चेंज करो, कोई दूसरा ही लगेगा सर, प्रॉब्लम नहीं है, होता है। तो यहाँ से आप कोई बात, तो ये आप यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अलग अलग जो मेरे पास फीचर्स है मैजिक पीसीस, तो आप ये कर सकते हो। ओके, इसको ऑरेंज करके आउट दिखा, ऑरेंज का दिखा, आउट दिखा, मैक्सिमम आउट, फाइनल आउटपुट यस दिखा है। एग्जिम का भी आपको इसका शेयरिंग बंद करो, ये वाला इसका शेयरिंग बंद करो, शेयर स्टॉप करो। ओके, ये कैमरा लेके आप फिजिकल मास्क के पास हो, सर मास्क के पास हो या कैमरा लेके अंदर। कैमरा हमको। Okay, so hopefully I'm audible to you guys, right? So currently you can see on screen I'm having my final output shared to you, and this is what we are having. We are doing a live keying, live camera tracking, and live color matching. So this is what we are doing in virtual production. So I hope you like the demo. Now, if you have any questions, any query, I know you have too much. Might be you are having multiple queries, multiple questions. So, sir, if anybody wants to come and experience this thing, is there any possibilities? Umesh sir? Yes, we can. Camera लेके So Camera आप लोग कैमरे पे हो,
So yes. So yeah, let me share my screen. I want to share some few things also on that academic related things. Let me share this thing first of all. Yeah, हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट स्लाइड देखा था, तो उसके बाद जो आपने अभी जो भी डेमो देखा ना, तो ये डेमो के लिए एक अच्छा से प्रिपरेशन लगी हम लोग को, और भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने फिल्म भी बनाई है बहुत सारी इसके लेके, स्टूडेंट के साथ लेके, और ऑलरेडी अभी 4 फिल्म बन रही है एक साथ में, जो शायद 20 तारीख तक शूट हो जाएगी कंप्लीट विद साउंड एडिटिंग एंड ऑल, पब्लिश करने के लिए एक कॉम्पिटिशन के लिए बना रहे हैं हम लोग यूजिंग दैट ग्रीन स्क्रीन एज वेल एज आईसी वीएफएक्स। तो या तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये सब आपको एज ए टेक्नोलॉजी अंडर वन रूफ आप कैसे करोगे। तो ये बहुत सिंपल है, आपको अनरियल इंजन आता है, अच्छी बात है। तो आप अगर आपको अनरियल इंजन नहीं आता और आप अगर एपटेक के स्टूडेंट्स हो तो आप अपने सेंटर्स पे अनरियल सीख सकते हो आराम से, यहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको, आप वहां से अपग्रेड करके आप अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। एंड जो भी वर्चुअल प्रोडक्शन रिलेटेड आपको अनरियल अगर आपको सीखना है तो हम लोग यहाँ पे आके सिखा देंगे, जब आप अनरियल इंजन आप अपने सेंटर पे सीख लो। अगर कोई बाहर से कोई इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स है एपटेक के बाहर के साइड से, या मैक हो गया, अरीना हो गया, उसको छोड़ के कोई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स है, तो अगर उनको नहीं आता है अनरियल इंजन तो हम लोग अनरियल इंजन उनको सिखाएंगे, या फिर उसके नियर बाय जो भी सेंटर्स रहेंगे मैक और अरीना के, वहां पे आप जाके सीख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सो आप यहाँ सीखो वहां सीखो, ऑलमोस्ट सेम है। जो भी बाकी रहता है वर्चुअल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूजिंग अनरियल इंजन, तो हम लोग वो चीज कराएंगे आपको यहाँ पे, कोई इशू। हाँ, अगर आपको अनरियल इंजन आता है तो उसके बाद परफॉर्मेंस कैप्चर है आपका, मोशन कैप्चर जिसको बोलते हो, इवन आपका हाइब्रिड वर्चुअल प्रोडक्शन जो आपको ग्रीन स्क्रीन में भी हमने आपको दिखाया है, और इवन आईसी वीएफएक्स जो मैंने गिफ्ट बॉक्स नाम का आपको एक फिल्म दिखाया था, वो ऐसे बहुत सारी फिल्में मेरे पास ये दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करके, और इवन 4 फिल्में बन रही है, तो ये भी आप यहाँ पे सीखोगे। तो ये आप 3 मॉड्यूल जो बाकी बचते हैं वो आप आराम से यहाँ पे सीख सकते हो अंडर वन रूफ, एंड इट्स अ कम्प्लीटली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर है क्योंकि वर्चुअल प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, द ब्लेंड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो आपको ये भी एक चीज देखने को मिलेगा, एक ये है इवन अवर ब्राइटेस्ट स्टूडेंट राइट नाउ। तो मैं आपको बताऊं अगर, तो रिसेंटली 100% प्लेसमेंट हम लोग का भी रिकॉर्ड रहा है, जितने भी पास आउट स्टूडेंट हम लोग के हुए हैं, और 2 स्टूडेंट भी पास आउट हुए, मैंने यहाँ पे डाला नहीं है क्योंकि रिसेंटली एक दिन पहले ही हुआ तो मैंने अपडेट नहीं किया है, बट या दे आर ऑल इन डीनैग, ये भी डीनैग में है, ये भी डीनैग में है। तो ये अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, ये जो है आपका मुंबई से है, ये आपका पुणे से है, ये आपका अगेन मुंबई से है, ये आपका इंदौर से है, ये आपका अगेन फ्रॉम नेटिव इज गुजरात एंड बट इन मुंबई। सो ये अलग अलग लोकेशन से आए हुए लोग हैं। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि डीनैक में तो 3 लोग हैं, इवन ये लड़का जो है अभी वो दुबई में बैठा है, विजुअल अपना जो वर्चुअल प्रोडक्शन सुपरवाइजिंग कर रहा है दुबई कंपनी। तो यहाँ पे एक कंपनी है, वहां पे भी जस्ट रिसेंटली जस्ट गॉट अ चांस टू वर्क विद इंटरनेशनल कंपनीज। तो एक मजर खान जो है, इवन योगेश एंड रितेश बोथ आर वर्किंग एट वॉल्यूम एक्स, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जो भी एक्टर्स हॉलीवुड हो गए या बॉलीवुड हो गया या साउथ की कोई भी एक्टर है, तो उनका जो भी डिजिटल डबल जो बनता है उस कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम एक्स, जो फोटोग्रामेट्री का एडवांस स्टेज ऑफ फंक्शन है, वहां पे उनके काम जो होते हैं वो। एंड डीने तो आपको पता ही है, इज अ वेल नोन ऑस्कर विनिंग स्टूडियोज। एंड यूएसपी ऑफ द वर्चुअल प्रोडक्शन एकेडमी इज नथिंग, इज जस्ट आपने अभी जस्ट एक्सपीरियंस किया, कैमरा है, लाइट्स, डीएमएक्स लाइट्स है, कैमरा मोशन ट्रैकिंग सॉल्यूशन है, जो मैं थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या है, तो कैमरा को सिंक करने का काम करता है, तो वो भी है। ब्रेन बार मतलब हाई एंड कंप्यूटर्स है, इवन इन स्टूडियो ऑल्सो, इवन इन लैब प्रैक्टिस ऑल्सो। आईसीवीएफएक्स के लिए एलईडी वॉल्यूम जो हम लोग के पास है वो एक आप यूज कर सकते हो। लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए जो सेटअप चाहिए वो भी है अपने पास, 12K कैमरा है। सो वर्चुअल स्काउटिंग जो मैंने आपको दिखा नहीं सकता कि इतना शॉर्ट टाइम में, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो वो भी आप डिजिटल रैकिंग कर सकते हो यूजिंग वीआर स्काउटिंग, जिसको हम वर्चुअल स्काउटिंग बोलते हैं, राइट। ये हो गया। नाउ या नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी Okay, आशीष सर कोई so क्वेश्चन है क्या? yeah, we have multiple questions. Like Darsh asked, I noticed that everything in the virtual production sits in the background. See, this is not a replacement. To be very frank, I talk
this thing multiple places. Like this is not a replacement or 100% replacement of traditional filmmaking. It's an extension of our current filmmaking, right? So need not to worry about anything that virtual production is going to replace our traditional one or VFX filmmaking or anything. No, it's not going to happen, right? So if you remember when chroma or came in picture, so same narrative has been said that क्या होगा सब replace हो जाएगा क्या नहीं, but we are still doing shooting on live locations. We are still shooting on VFX or chroma background. Also the same way, this is new extension that we are using to shooting against chroma, replacing chroma live or LED volume. So this is not a replacement of our traditional filmmaking. I hope I answered. Another one is from Chetana. Sir, can you please show the lights flicker blueprint again? Yes, we can show, but I think we are almost done with our session. So probably some other time we can show it to you. अगर आपको सिर्फ वर्बल यूज करना है सर चलो नहीं ब्लूप्रिंट में जो लाइट फ्लिकर कर रहे थे जो गिफ्ट बॉक्स में जो किया था आपने गिफ्ट बॉक्स में किया था या अभी जो कर रहे थे गिफ्ट बॉक्स So, actually, we made a simple blueprint using in general क्या होता है कि कोई भी चीज आप बन चालू करें, ठीक है, एक स्टेज में आप बन चालू करें, तो इस स्टेज में आप इंटेंसिटी बताएं कि 0 इंटेंसिटी से लेके 100 तक कोई भी एक नंबर रैंडमली चूज करोगे, बंद हो रहा है तो इंटेंसिटी मैटर नहीं करता, अगर चालू हो रहा है ये इंटेंसिटी होगी वो भी रैंडमली कंप्यूटर पिक करेगा। तो ब्लूप्रिंट का सिंपल लॉजिक है, अगर ऑन हो रहा है कितना इंटेंसिटी देना, ऑफ में तो बाय दैट वो रैंडमली हम कंट्रोल करते हैं तो वो फ्लिकरिंग लाइट फ्लिकरिंग का होता है। थैंक यू तुषार सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आई होप इट्स क्लियर टू चेतना एंड आल्सो ओके। सो मैट ने सवाल पूछा है, हाउ डू यू सी द रियल टाइम कैमरा? Okay, so we are using live camera tracking solution called HTC Vive Mark, which I showed you a few time back. So we are using real-time tracking solution to sync my physical camera to my virtual camera. I hope it's clear. Pari Gosari is saying, what are some common challenges faced when using virtual Unreal in virtual production? Not as such. We are facing problem of crashing our project again and again. Although we are using high-end things, so you need to optimize your scene. This is the basic fundamental. Need not to use unnecessary thing. You have to migrate that thing. Multiple things you need to do. You have to optimize your light. You have to optimize nanite. You have to use nanite, right? You have lumen. Multiple things you need to do to optimize that thing. Another problem we faced while we are working on few projects, like how to match camera's depth of field to my Unreal Engine's camera's depth of field. So that is little tricky. So probably I cannot explain it how we fix that, but I'll suggest you to come down here so that I can show it to you. But yeah, that kind of problem we face, right? Okay, so another question is virtual production give good results in wide angle shot with depth of field? Yes, it will. Just you need to take care about that, how much distance you are having from your camera to your subject to your LED volume wall. That you need to take care about. Sir, do you face any color space transform problem in virtual production? No, we always take care about what kind of color space we are using in my system, in my Unreal Engine, in my camera, and whatever out we are having. So we need to take care about. If you are going to take care about everything, there won't be any problem. So is it possible to add glare or reflection of the environment when the subject is very shiny object? Because if we miss adding this kind of see, there is multiple things which we can do. I remember we are shooting for FTI, and there is a scene of pond where the character is standing near the pond. So we need to create the
what we can say, the reflections of water. So what we did, we took some water on pot, throw direct light, and we put our light in that angle that the reflection is coming on the character's face. So those kind of nitty gritties we are doing. If you want to create clear, definitely you can do that. So it's a very tricky thing. You can do it. How can you use mocap while on a live stream? You can connect your mocap suite or mocap data directly via live link through Unreal Engine, and that's the way how we can use our mocap directly live on our project. Also, what PC setup is required for a Swift editing? What is Swift editing? Smooth editing or Swift editing? I'm not getting. But he's saying what PC setup is required for a Swift editing. Can you explain your question so that I can answer? How to manage shadows and reflections? Yeah, we can manage shadows and reflections. We need to take care about while doing lighting is very important. Whatever light we are having, you need to do a particular lighting so that your shadow generates and we can preserve our shadows while doing. Yeah, you can do. Another workshop session is presented in a virtual outing. Like, yeah, we have multiple sessions planned. Definitely, we are going to plan something like that. It is possible to do effects such as rain, snow, fog, dust. In Unreal Engine, we can do, but if you want to mimic that thing, you need to make your set like you are having rain in real characters as well in Unreal Engine as well. So you have to work more on physical sets, right? Just to compensate those things. So I think it's a quite good questions we are having. And any other questions, please go ahead. Otherwise, we have 5 minutes top of our time. Yeah. So over to you, Umesh, if you want to share anything. So guys, मैंने एक क्वेश्चन आंसर में एक लिंक शेयर किया है. अगर आप देखोगे तो लिंक पे जाके अगर आपको स्टूडियो विजिट करना है, आपको देखना है कि एक्चुअल फिजिकल में, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन लाइव में आपको शायद थोड़ा कुछ समझ में ना आया हो. अगर आपको जानना है और डिटेल में, इवन आपको कैसे काम होता है वो भी देखना है आपको, तो आप एक फॉर्म का एक लिंक मैंने पेस्ट किया आपके क्वेश्चन आंसर में. उसको यूज करके आप फॉर्म फिलअप करो, और जो 3 टाइम स्लॉट दिया गया आप लोगों को, वो 3 टाइम स्लॉट्स में से आप कोई भी एक स्लॉट्स को पिक कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. इफ यू आर अराउंड, इफ यू आर इन मुंबई, तो आप आराम से आ सकते हो. मुंबई वाले को तो प्रॉब्लम है ही, बट जो बाहर से आ रहा है तो उनके लिए भी अगर कभी भी उनको आना है, चेक करना है, देखना से क्या है आपका स्टूडियो वगैरह देखना है, तो यू कैन कम डाउन एट एनी टाइम, इज नॉट एन इश्यू. बट आपको ये फॉर्म फिलअप करके आना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपको हेल्प कर पाऊँ. तो ये है ओवरऑल. अगर आपको कोई कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से आप अपनी जो वर्चुअल प्रोडक्शन एकेडमी की जो वेबसाइट्स है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. तो यहाँ से आपको जब भी तो ब्राउजर्स चाहिए या कुछ इंक्वायरी करना है आपको, तो आप यू हैव ऑलरेडी दिस नंबर्स. ब्राउजर्स ऑल्सो इंक्वायरी नाउ करोगे आप तो आपके पास एक इंक्वायरी फॉर्म आ जाएगा. जस्ट सबमिट इट, माय टीम विल कांटेक्ट यू एट इमीडिएट बेसिस. जैसे ही आप सबमिट करोगे तो एज सून एज पॉसिबल माय टीम विल कांटेक्ट यू. तो ये एक है. तो आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या वर्चुअल प्रोडक्शन रिलेटेड क्वेरीज है, या तो इवन नॉट अबाउट वर्चुअल प्रोडक्शन एकेडमी, इवन आपको गाइडेंस चाहिए तो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नॉट एन इश्यू. तो यू कैन कम डाउन एट द वर्चुअल प्रोडक्शन एकेडमी मुंबई. सो या, तो प्लीज आप लोग फॉर्म फिलअप करो. मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, तो अगर आपको आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि अगर आपको लाइव देखना है तो आपके पास यही ऑप्शन है आपको आने का. तो वी कैन प्लान योर डेमो. ओके, नीड नॉट टू वरी. हम लोग आपके नंबर पे जो रजिस्टर्ड नंबर्स हैं उस पे ये लिंक शेयर कर देंगे, so that if you are going to miss over here, you will have link on your phone. You can fill it up, you can come anytime, and you can visit our facilities. I think that's it, sir, from our side. Yes. Completely. Thank you very much, guys. I hope you get a lot of knowledge on virtual production technology as a real-time content creation, so the virtual production as a filmmaking tool
for better storytelling enhancement. So yeah, so I hope you learned a lot of things from this webinar. So I am signing off right now, Ms. Patel and Asis and Tushar. So yeah, आप लोग कभी भी है तो आप just visit करिए website को and contact. Okay, so thank you very much, guys. Chat box to the chat box to the. I already shared my that form link in chat box also. आपको इवन बाद में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको मैं भिजवा दूंगा. Okay. Sure. So yeah, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.